Morning students, in last lecture we discussed about the when the current is flow in the wire, so then it produces the magnetic field. But now the question arises, when this device is placed between the strong magnet, what happens? Then it experiences a force, that force is known as the magnetic force. Today we will discuss the magnetic force. Dear students, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force, or it can be explained by the following activity. Force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. For this, we require a horseshoe magnet, an aluminum plate, copper wire, battery, key, and a stand. Students, when there is no current in the circuit, there is no deflection in the aluminum plate. Now, what happens when we pass the current? As soon as we pass the electric current, then the aluminum plate is deflected, which implies that a magnetic force is exerted on the aluminum plate. Now, if we change the direction of the current, so what happens on the deflection? Now, it is clear from this figure, the direction of the battery is changed. Now, when we change the direction of the current, then again deflection is occur, but now in this case, the deflection is occur which is opposite to the previous deflection. स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको क्लियर है कि पहले हमारे पास डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आया है और अब जो डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये चेंज क्यों है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। नाउ, क्या डिफ्लेक्शन सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज करने से चेंज होता है? क्या अगर हम मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर दें, मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर दें, क्या वहां पर डिफ्लेक्शन में चेंज आएगा? नाउ फॉर दिस, अब हमने क्या किया है कि मैग्नेट की जो पोलैरिटीज हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है। साउथ पोल को नॉर्थ पोल से और नॉर्थ पोल को साउथ पोल से रिप्लेस कर दिया है। व्हेन वी रिप्लेस द पोलैरिटी, अगेन डिफ्लेक्शन इज फाउंड एंड विच इज द इन अपोजिट डायरेक्शन एज वी गेट द प्रीवियस केस। नाउ इस केस में बेटा क्लियर है आपको कि जैसे ही डिफ्लेक्शन जब साउथ और नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन कंडीशन में है तो डिफ्लेक्शन इस तरीके से होता है, और जब नॉर्थ और साउथ पोल की हम पोलैरिटीज को चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या कंक्लूजन्स बता रहा है? नंबर 1, द एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। Number 2, if we change the direction of the current, the direction of the force is also changed. If we change the direction of the magnetic field, then the direction of the force is also changed. Now, this proves that the direction of the force of conductor depends upon the direction of the current, direction of the magnetic field, and also the magnitude of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field. स्टूडेंट्स, इस कंक्लूजन को फ्लेमिंग ने अपने एक रूल के रूप में शो किया, which is known as the Fleming left hand rule. According to this rule, if we stretch our left hand in such a way, our thumb, first finger and the middle finger are mutually perpendicular to each other, then first finger represents the direction of magnetic field, second finger represents the direction of the current, then thumb represents the direction of the force. This is known as the Fleming left hand rule. Now, conclusion of today's topic: factor on which magnetic force depend. Number 1, magnetic field. Number 2, current. Number 3, length of the conductor. And number 4, the magnetic force depends upon the angle must be 90 degrees between the magnetic force and the current carrying conductor. Dear students, we provided a sheet for your practice.
If you have any problem, you can call us between 1 p.m. to the 4 p.m. Thank you very much.